ये तो ऐसा हो गया, एकदम एकदम फ्लैट हो गया यार। बस इजी हो, आई थिंक इजी होगा यार, इसमें क्या ही टफ होगा। लेट्स डू दिस पीपल, लेट्स डू दिस। चलो, तो पहले क्या किया उन्होंने? हाय मंचकिन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट इज ऑफिशियली द फेस्टिव सीजन। इफ यू लिव अराउंड नॉर्थ, यू नो ना, इस टाइम ना तो इसे ना विंटर्स का ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया है, हवा में ठंडक है एंड इट एक्चुअली हिट्स यू कि यार अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। सब लोग अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, सफाइयां शुरू हो गई हैं, मिठाइयां बन रही हैं एंड इट्स जस्ट सच अ वाइब। आई एम श्योर आपके फीड में भी ना बहुत बार ये वीडियोस आते होंगे कि इजी क्विक DIY लास्ट मिनट डेकोर आइडियाज फॉर द फेस्टिव सीजन, फॉर दिवाली सीजन एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देखने में बहुत सुंदर एंड इजी लगता है, बट टुडे आई एक्चुअली वांटेड टू पुट इट टू द टेस्ट एंड सी क्या ये वायरल वीडियोस आर एक्चुअली इजी एंड क्विक एंड गुड लुकिंग। बिकॉज कैमरा में अच्छा दिखता है, बट इज इट रियली इजी टू डू? बिकॉज ऑनेस्टली आई एम वेरी बैड एट डूइंग DIY वीडियो। एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट DIY वीडियो। ऑलराइट, सो ये फर्स्ट वीडियो इज बाय उपवन धवन एंड इसका इंस्टाग्राम हैंडल है @gram_in। सो आई सॉ दिस रियली इंटरेस्टिंग DIY दिया स्टैंड जो मीशो पे मिलता है, आई थिंक फॉर 650-600 एंड ही डिड इट फॉर लाइक लिटरली अराउंड 20 रुपीज। सबसे पहले 5 बैटरी के ऊपर बेकिंग करके कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे और फिर इसे ड्राई होने छोड़ देंगे। इसके ड्राई होने के बाद यूज कर सकते हैं। Got it. It looks very simple. 5 बैंगल्स चाहिए, उसमें पुरानी बोली है पर मेरी नहीं है। Anyways, so I'm going to use these silver 5 बैंगल्स that I have. And we also ordered M seal, जो मुझे पता नहीं था क्या होता है M seal। उसका M seal थोड़ा सा डार्क ग्रे वाइब का था, बट हमारा थोड़ा सा लाइट है। But I'm assuming कि it's supposed to be the same thing. Whoops से ये सब तुझसे दिखाया ही नहीं है स्ट्रगल। कैसे पता चलेगा किसी को कि कैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? People, दिया टिक जाएगा ऐसे? If I add one here, धोखा था वो वीडियो। ठीक नहीं था ये, बिल्कुल भी ठीक नहीं था यार। यही तो इधर उधर हो रहा है। प्रशांत फटाफट से दूसरा M seal। ये तो ऐसा हो गया, एकदम एकदम फ्लैट हो गया यार। भैया ने झूठ बोला हमसे, धोखा। और कितने मिलियन व्यूज आए थे, उन्होंने सबके साथ धोखा किया, मेरी फीलिंग्स के साथ भी खेला भैया ने। It hardens within 90 minutes at room temperature, but I don't have 90 minutes. It's supposed to be a last minute DIY. Excuse me, sir. I need my time back. I'm gonna give this like a fair chance and I will let this dry for 90 minutes. Till then, I will go ahead and do the other DIY piece. बस easy हो, I think easy होगा यार, इसमें क्या ही टफ होगा। Let's do this. चलो, तो पहले क्या किया उन्होंने? So I'm not very sure कि what is the right glue to use. So I'm just starting off with Fevicol. माइलो भी देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये क्या कर रही है? It's so confused. यहाँ पे आसपास सब है, मम्मी दिखाओ, मम्मी खड़ी है, प्रगति है, सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब बस मुझे घुमाना है इसको, which is interesting. If only I could record प्रशांत's reaction, then बहुत बदतमीज है यार, ये कभी भी ना मोटिवेट नहीं करता यार। मैं कुछ नया करती हूँ, पहले ही हंसना शुरू कर देता है। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहा है। Love this whatever I'm doing right here. It looks beautiful. ब्लर में अच्छा लग रहा है। I think that is one successful DIY, which I think Prashant does not think this is a successful project. I think we did pretty good. I like जो contrast add किया है प्रगति और मैंने इसमें। It looks fine. I think अब इसमें हमें मेरा लेस निकल रहा है, ऐसे करके देखो, बहुत मजा आ गया। And this is a 7.5 from my end. Let me know in the comments down below what do you guys think. प्रगति कितना रेट करोगी? प्रगति says it's a solid 8. प्रशांत saying it's a solid 12 on 10. Which I know झूठ है वो। 12 में से 1 काटना है क्या? 1 काटना है, तो वो कह रहा है it's a 2 on 10 from प्रशांत। That's it. बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि आपको ये कैसा लगा and let's do the next DIY project.
गाइस, वेलकम टू दिवाली सीरीज। दिवाली डेकोरेशन के लिए आज मैंने बनाए हैं दिए। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत कम टाइम में बनके रेडी हो जाएगा। लिया और उसके बॉर्डर्स पे मैंने लेस लगाई है आपके पॉम्स। सेंटर में मैंने पिंक कलर फिल, फिर इसको कुछ मिरर्स की हेल्प से डेकोरेट कर लिया है। और देखिए कितना सिंपल था ये बनाना। Alright, so this looks easy. अब पता चलेगा कि कितना easy है ये. First of all, I need to get some cardboard. So, and here I have my piece of cardboard ready with my scissors. अब ना इसमें drawing वाला tricky part है. I have to draw out a दिया का shape. Now it's better. है ना, थोड़ा better हुआ ना? हमारा दिया का कटआउट हो चुका है एंड ह्यूज शाउट आउट टू प्रगति फॉर हेल्पिंग मी डू दिस. इतना सुंदर लग रहा है ये. प्रगति इज बैक. She is here to help. पट हो जाए हमारा काम. तो she is working on the yellow part. So alright, this is how it looks like. Honestly, this looks very very good. बहुत मस्त लग रहा है यार. इसको I think I'll add it here. दिवाली के टाइम पर हम इसको दो different बनाएंगे. एक यहाँ पे लग सकता है, एक यहाँ पर. I think this one should be a solid 10 on 10. The best one so far. Easy to do, super beautiful, and I think you should try it out too. So this one was a massive success. Next video is by Bloom Shots and honestly मुझे ये बहुत पसंद आया था, especially for Diwali. I think this is gonna be a very beautiful decor DIY. So let's watch this video together. Very pretty यार. Wow. All right, let's do this. So to ease out my work, वैसे वीडियो में दिखाया नहीं है, but I have a very strong feeling that she used a trace out, sort of like ऐसा, जो मैं help कर सकती हूँ to cut out the shape. So we got these glitter sheets from a local store. काफी spongy soft सा material है ये, which is very interesting. And basically what I plan on doing is that I'll keep it right here. Maybe use a pencil, like trace it out, and then I'll cut it. So this is what my plan is. And then जब वो piece cut हो जाएगा, फिर हम mirror लगाएंगे, lace लगाएंगे, हैंगिंग करेंगे and all that stuff. So let's begin. तो ये मेरा बाहर का आउटलाइन बन चुका है. Now I will cut this. Well guys, प्रगति is back again. So cutting वाला काम वही कर सकती है क्योंकि मुझे पता है I'll mess out. I'll miss out what? I'll mess the shape. समझ जाओ यार. So here are our cutouts. Again, thanks to Pragati. So अब हम इसको shape करेंगे using the same sticker. वैसे तो according to the video, she added कुछ ऐसे बिंदी जैसा lace जैसा था, but हमने पूछवाया तो unfortunately वो मिला नहीं मुझे. तो जो I have available, I'm gonna use that. Alright, so this is how it looks like. और आप सोचोगे ये नेट का कपड़ा और ये मिरर कहाँ से आया? ये already we had it in our studio. हम इसको यूज करते हैं shoots के लिए. So we just simply added it. But video में they just added a गोटा का एक लटकन types and उस पर उन्होंने छोटे-छोटे मिरर्स चिपकाए थे जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं. And honestly, this look really pretty. One tip is that what she did was because ये इतना हल्का है ना पेपर, ये उड़ रहा है. So अभी I don't have like a lot of time, but typically what I'll do is I'll stick one more piece पीछे के साइड कि अगर ये उल्टा इधर उधर हो तो बुरा ना लगे. But I love it. I am definitely going to use this piece of decoration अपने घर पर during Diwali, and I think it looks really pretty. What do you guys think? I think this is a solid 10 on 10 again. Very easy to do, very satisfying to do it, a lot of fun. And तुम लोगों को क्या लग रहा है? प्रगति, you like it? बहुत मस्त. प्रगति loves it, प्रशांत loves it too. And आप लोग comment section में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा. Everyone, welcome back to another video. I'm kidding. It's not a new video. It's the same old video. It's just outfit change हो गया है. Because कल हमें video थोड़ा सा छोड़ना पड़ा because बहुत late हो गया था. And we are still left with one more DIY to test out. So I'll give you an update. अभी जो नया वाला है वो तो मैं दिखाऊंगी. But कल mostly everything was a success. Everything looked really pretty, and I'm 100% using these piece of decor during Diwali. And in fact, Pragati and Prashant
भी बहुत इंप्रेस हो गए थे, शायद वो लोग भी अपने घर पे ये DIY करने का सोच रहे हैं. बट देयर वाज वन मेजर फेल, दैट वाज द फर्स्ट वन. हमने चूड़ी से दिया स्टैंड लगाया था, हमने बहुत जुगाड़ लगाने की कोशिश की आज भी इसको ठीक करने की. एक तो एम सील ठीक से नहीं लगा, वन इट टेक्स फॉरएवर टू ट्राई. सेकंड आई आल्सो फील दैट इट वाज नॉट होल्डिंग वो चूड़ियां इतनी इजीली जितना वीडियो में दिखाया था. सो आई फील सॉर्ट ऑफ दैट द वीडियो वाज अ लिटिल मिसलीडिंग, क्योंकि काफी स्टेप्स उन्होंने बताया नहीं ठीक से. एंड हमने इवन गोल्डन स्प्रे पेंट भी किया, सोचा कि चलो इसको हम, क्या पता इसकी खूबसूरती को हम थोड़ा सा छुपा पाए. But sadly this came off. नीचे का ये this platform bit does not look cute at all. So I think this is like a major fail. So like again, like it's minus, like wait a second. It's definitely 0 on 10. It does not look good. And even the golden spray paint that we got, I don't know, for some reason it looks very dull and it's like a very weird, sad, metallic but shiny and matte at the same time. I don't know, like it's a very weird color, finish and everything. Like so कलर का भी मज़ा नहीं आया, चलो वो तो बेस तो अजीब था ही. सो आई थिंक दिस इज लाइक अ मेजर फेल. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक एवरीथिंग वाज रियली नाइस. नाउ ऑन टू द लास्ट वन दैट आई हैव हियर. इट्स अ ब्यूटिफुल decor that I saw on Instagram by Simran_RAN. Rana है शायद ये, I'm not very sure. Yeah, she's based out of Uttarakhand itself, so that's amazing. I think it's Simran Rana. She shared this beautiful piece of decor जो मेरे पास almost सभी कुछ है. मैं ingredient बोलने वाली थी फिर से. मेरे पास सभी कुछ है इस प्रोजेक्ट को करने के. So let's watch this video together. This one looks easy though. मतलब बस लेस चिपकाना है. बट मैं पहले से नहीं बताऊंगी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया था तो इट वॉज अ मेजर फेल. इट्स मेस्टली लेसेस एंड लेसेस ओनली. सो इसमें आई सी दैट शी इज़ एडेड लाइक मिरर्स एंड मिरर्स इतने छोटे हमारे पास है नहीं, आई थिंक ख़त्म भी हो गए हैं. एंड जो ये अंदर शुभ लाभ लिखा है, ऐसा वाला राइनस्टोन वाला लेस या वो भी नहीं है हमारे पास. सो आई थिंक वी विल हैव टू try something else instead of this. So let's see how it works and let's do this. Okay, so 2 piece of cardboards I already have. हमने square shape में already काट रखा है इसको. And we will be using this pink कपड़ा that we found द्री के studio में पड़ा हुआ. It's a beautiful pink crepe. And again, जो मैं कल laces दिखा रही थी ना, we will be using that. I think I want to use this lace today because it's actually really pretty. But because मेरे को अपने DIY skills पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, what she did was उन्होंने पहले laces लगा दी थे and then फिर अंदर लिखा था. What I will do is पहले मैं अंदर लिखूंगी and जो space बचेगा फिर मैं आसपास लेस लगाऊंगी just in case, because मुझे अपने पे भरोसा नहीं है. तो let's get sticking ये कपड़ा on this. So इसके border के लिए what she did, she used like pearl का कोई lace. I don't have that. So I'll use वही झुर वाला lace that I have, and I think it's gonna look nice अगर वो ऐसे side में border होगा ना. I think this is gonna be really cute. So I'll just start sticking this. End product, you guys. I absolutely love it. थोड़ा time consuming था but definitely worth the wait, and it was easy. बस शुभ और लाभ बनाना था and it was ज़्यादा टाइम, I guess 1 घंटा ही लगाया हमें इसे बनाने में. The best part is you can use whatever laces that you have in your house. You can even switch the कपड़ा. पिंक नहीं मिल रहा है, आप येलो भी यूज़ करोगे या ऑरेंज भी यूज़ करोगे, ग्रीन भी प्यारा लगेगा, रेड भी प्यारा लगेगा. Whatever that you have in the house, you can use that. And I still need to figure out इसको मैं कहाँ place करना चाहूँगी, and maybe ऊपर नीचे ऐसे करके ऐसे या कैसे भी. I'll have to figure that out. But honestly, this is a solid 10 on 10. I think it looks beautiful. You can add mirrors. हमारे mirrors खत्म हो गए थे. You can add sequins. Why not? Add more laces. Why not? ये शुभ लाभ, हमारे पास laces नहीं थे rhinestone वाले, तो हमें ये मोटा वाला lace यूज करना पड़ा. थोड़ा सा tricky था इसको करना, execute करना, like वो ऐसे सा और फिर भ का ये गोल गोल सा बनाना थोड़ा सा tricky था. But eventually, after a lot of trial and error, we got it right and it worked really well. We used fabric glue, by the way, to stick this, and we also used blue tack इसको चिपकाने के लिए. And I think this is again a solid 10 on 10. आप बताओ comment section में आपको ये कैसा लगा. And we
with this we end today's video. Honestly, I loved everything that we did. मुझे मजा आया ये था सा crafty stuff करने में. But will I do it again? Well, maybe for another video if this video performs good and if you love it and if you want a part 2, I would love to try it out again. But अगर video नहीं बनेगी तो maybe शायद I won't do it again. It needs a lot of patience and I don't have patience and I'm not good at crafting things and drawings and all that stuff. But in general it was fun because I had friends around. मम्मी भी आ गई थी, उन्होंने tag along किया and हम सब मिलके हम कर रहे थे, तो it was a cute moment there. And you can do this with your friends and family. I think that's a really fun activity that you guys can try it out yourself. And सब DIYs में से I think the biggest fail should be this one. जो बेचारा एक लौता सा ये दिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था. It is just not a cute thing to look at. I don't know क्या क्या क्यों क्या हमने इतना सब कुछ waste हुआ है इसमें. But anyways, apart from this, I think सभी बहुत अच्छा था. And let me know in the comments down below आपको कौन सा अच्छा लगा. Which one you will try during Diwali, and I would love to know that. And with this, we end today's video. Let me know which one was your favorite. If you enjoyed this video, hit the like button, share this video with your friends and family. Make sure to subscribe if you haven't already. And I'll see you guys in the next video. Bye. Mwah.